So after learning about variation in demand, that is expansion and contraction in demand, the next topic will be changes in demand. Write down changes in demand. Changes in demand, that is change in demand कब होगा? When price is constant और बाकी सारे factors change होते हैं. When demand of a commodity, अब जब change होगा ना, तब use करेंगे word increase and decrease. जब भी variation होता था तब rise and fall use करते थे word. अभी ग्राफ से और अच्छा समझ में आएगा आपको. When demand for a commodity, write down. When demand for a commodity increases or decreases. यहाँ rise fall word use नहीं किया है, increase or decrease word use किया है. So when demand for a commodity increases or decreases due to change in other factors, due to change in other factors, due to change in other factors and price remaining constant. Very important line. So variation in demand में price changes, other factors remains constant. Whereas changes in demand में other factors changes, but price remains constant. This is a very important distinction for your objective questions also. So changes in demand is of two types. Changes in demand is of two types. First is increase in demand. Increase का word पढ़ते ही समझ जाओ, for reasons other than price. Price reason नहीं है. So increase in demand and the other one is decrease in demand. Let's make a diagram to understand better. The more you write, the better you understand and the better you remember. Those who are not writing with me won't be much help for you. X-axis, there is always quantity demanded. Here we are writing it in kgs. So you have to mention pura quantity demanded in kgs. You have to write. And y-axis पे price in rupees. Write properly price in rupees. Same way x पे quantity demanded in kgs and y पे price in rupees. Write properly. So for increase in demand, see there was P price पे originally Q quantity was demanded. एक price थी certain P, उस पे Q quantity was demanded. But now what happens is price is constant, but maybe किसी इंसान की income बढ़ गई, okay? Or maybe the season is such, maybe we are making अपना क्या बोलते हैं, say season बढ़ा,
वुलन क्लोथ्स का यदि हम एग्जांपल लें तो वुलन क्लोथ्स विल बी डिमांडेड इन विंटर, सो बिकॉज ऑफ चेंज इन सीजन उसने किसी चीज की डिमांड बढ़ा दी. प्राइस पहले भी 400 रुपीज पर स्वेटर थी, अभी भी 400 रुपीज पर स्वेटर ही है, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन सीजन और चेंज इन इनकम उसने उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दी. सो यदि मैं ओरिजिनल डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व वाज दिस, करेक्ट. So this is my original demand curve DD. Price is same, P ही है, प्राइस चेंज नहीं हुई, तो ये चीज सेम है, बट किसी रीजन से डिमांड बढ़ गई, दैट इज इट इंक्रीज्ड. सो मुझे नया क्वांटिटी मिल रहा है यहाँ पर Q से Q1, डिमांड का इंक्रीज हो जाना, डिमांड कर्व नया पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाना. ओके, सो जब हम वेरिएशन देख रहे थे, दैट प्लेस वी वर सीइंग दैट वेरिएशन इन डिमांड, the reason is only change in price and it is upward and downward movement on the same demand curve, whereas in increase in demand and decrease in demand there is a shift in demand curve. So in increase in demand there is a rightward shift in demand curve. So यदि मैं नया demand curve plot करूं, how will it look? Here ऐसा, DD new demand curve. So can you see that the rightward shift, it is now DD तो original था, now it is D1 D1. So this is called as increase in demand curve. तो यहाँ पे rightward shift को increase लिखो आप. So increase in demand refers to increase in quantity demanded due to favorable changes like taste, income, climatic conditions, etc. Price remaining constant. तो increase in demand में हम क्या लिखेंगे? It refers to point number 1. It refers to increase in quantity demanded it refers to increase in quantity demanded due to favorable changes in factors like tastes, income of consumer, climatic conditions, etc. Price remains constant. Very important. Price इसमें change नहीं होती. Price remains constant. So rightward shift in the demand curve. एक डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे नहीं, पूरा उठ के राइट में चला गया. Rightward shift in the demand curve is known as increase in demand. Price remains constant. Other factors change. So what you will write is DD demand curve shifts to the right to D1 D1. Write down, children. DD demand curve use the word shifts. Shift होता है increase decrease में, upward downward movement होता है expansion contraction में. So DD demand curve shifts to the right
to D1D. This is the explanation your answer should carry, which indicates increase in demand. Right now, DD demand curve shifts to the right to D1, D1, which indicates increase in demand. Now moving up to decrease in demand. The same P price पे Q quantity originally and plot a original demand curve. Miss, DD. Yes. अभी आपने क्या बोला कि which indicates? DD demand curve shifts to the right to D1, D1, which indicates increase in demand. Which indicates increase in demand. Next जो हम ले रहे हैं, that is decrease in demand. That indicates decrease in demand. So we have a original demand curve DD, but अब price तो same ही है, but पर कुछ reason से demand कम हुई है. तो जरा बताना, जब increase in demand is a rightward shift, तो decrease in demand will be a rightward की बजाय कहाँ जाएगा वो? अरे दिमाग तो लगाओ, जोर से तो बोलो. Leftward shift. Increase in demand is a rightward shift, decrease in demand is a leftward shift. अरे राइट लेफ्ट में पीटी नहीं करा रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुमको डिमांड का राइट लेफ्ट शिफ्ट करा रही हूँ, वो तो बोलो. ओके, सो प्राइस रिमेन सेम, बट हमारी क्वांटिटी किसी रीजन से कम हो गई. पी प्राइस पे पहले भी था, प्री प्राइस पे अभी भी है, पर क्वांटिटी क्यू से Q1 हो गई. सो वी फाइंड अ पॉइंट हियर Q1 and नया डिमांड कर्व DD. So this is D1, D1. नया demand curve D1, D1, and the shift is leftward shift. और increase की बजाय इसको हम बोलते हैं decrease. To explain better, मैं इसको D1 की बजाय D2 लिख देती हूँ. D2, D2. Okay. So decrease in demand क्या होगा? It refers to decrease in quantity demanded. Write down. It refers to decrease in quantity demanded. मिस तिगमानियों को क्लास में लो ना. Okay. It refers to decrease in quantity demanded due to unfavorable changes in other factors like tastes, income of the consumer, climatic conditions, etc. और लिखना ही लिखना है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. लिखना ही लिखना है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है, डिमांड कर्व shifts to the left demand curve shifts to the left
from DD to D2. इसमें इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम DD टू D1 था. इसमें डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम DD टू D2. इसका डिस्टिंग्विश भी आ जाता है साथ में. सो इफ चिल्ड्रन आप ये पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं तो आप डिस्टिंग्विश कैसे लिखेंगे? Now next diagram, to increase and decrease, it shows together. फटाफट से इंक्रीज एंड डिक्रीज साथ में दिखा रहा है वो डायग्राम. यदि आपको इंडिविजुअली समझ में आया तो ये तो आप खुद से प्लॉट करना चाहिए अभी आपको. ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस. पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी. Gives me a DD demand curve, downward sloping DD demand curve. I see again and again downward sloping demand curve from left to right, so that registers in your mind. Okay, so price remains same, still quantity demanded increases, तो नया पॉइंट मिल जाएगा हमको Q1, एंड जब कम होगा तो नया पॉइंट मिल जाएगा Q2. So rightward shift is known as increase in demand. D1 right में shift हुआ, that is increase in demand. लेकिन यदि quantity demanded कम हो गई, point इधर मिलेगा. So now that is the leftward shift. इससे कितने objective questions बनते हैं? There are many. So if you understand the concept, objective question answer करना easy है then. This is decrease. And the point is D2. So rightward shift in the same demand curve is increase in demand, price remains the same. Leftward shift in the same demand, leftward shift on the demand curve, पूरा demand curve उठ के left में आ गया है. Price remains the same, it is decrease in demand. So rightward shift increase, leftward shift decrease, that should be registered in your mind. Now next demand curve is of market demand. See individually, say for example प्रार्थना demand कर रही है mangoes, एक अकेली प्रार्थना demand कर रही है तो वो individual consumer हुई ना. But प्रार्थना की बात छोड़ो, मेरी क्लास के सारे बच्चे and even बाकी सारी क्लासेस के भी सारे बच्चे mangoes demand कर रहे हैं. Now every consumer in the area is demanding, so that is market demand. उसका टेबल कैसे होता है, उसका कर्व कैसे होता है, that also we have to see. So next topic is market demand schedule and market demand graph. Market demand schedule and market demand graph. So let's assume price of the commodity is same. कोई 10 से ले लेते हैं हम उल्टा. So price
and there are 3 consumers, quantity demanded by consumer A, B and C. So quantity demanded by consumer A, B, C. We are assuming that there are 3 consumers in the market and summation of demand of A, B and C is going to be market demand. Market demand. That is A plus B plus C. That is market demand. And price तो हमेशा रुपीस में ही होगा, अब ये बात तो बताने वाली बची नहीं. So let's assume that price पहले 10 था. We will need 5 columns. इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है, शॉर्ट नोट ऑन मार्केट डिमांड. तो शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा और ग्राफ भी. टेन, लेट्स मेक इट फॉलोइंग. 10 से गिरा प्राइस 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2. दैट इज बेसिकली मैं 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 उल्टा चला दो, ऐसे ध्यान रखो. Okay, now let's talk about consumer rate. जैसे जैसे प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी. हाँ बढ़ने वाली है, बिकॉज द रिलेशनशिप इज इनवर्स रिलेशनशिप. मान लो 10 रुपीज पे वो 5 यूनिट्स ऑर्डर करता था, ठीक है, इन केजीज. क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन केजीज, दैट यू हैव टू मेंशन. सो नाउ what you do is 5 की टेबल चलाओ. 5 1 जा 5. जैसे जैसे प्राइस गिर रही है डिमांड बढ़ रही है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 and 5 5 जा 25. As you see price falling, demand is increasing. याद रखने के लिए 5 की टेबल हमने स्टार्ट किया. 5 10 15 20 25. ओके, बी कंज्यूमर का 10 से स्टार्ट कर लो. सो 10 15 20 25 and 30. Okay, and C consumer का 15 से start कर लो. add up 5, 15 20 25 30 and 35. better to be in this table because हमको ध्यान रहेगा कि प्राइस कैसे 10 8 6 4 2 2 का गैप रखा. बस 5 इनिशियल 5 याद रखो और याद रखो 5 10 15 20 25. फिर ये 10 इधर कर दिया, 10 15 20 25 30 और फिर 15 इधर ले लिया. ओके, नाउ ऐड अप टू मेक इट अ मार्केट डिमांड. 5 plus 10 plus 15 is 30. Same way 10 plus 15 plus 20 is 45. Same way 15 plus 20 plus 25 is 60. 20 plus 25 plus 30 is 75 and 25 plus 30 plus 35 is 90. तो अब यदि मैं ग्राफ बनाने जाऊंगी वही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. एक्स एक्सिस पे क्या डालूं, वाई एक्सिस पे क्या डालूं. अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था. क्वांटिटी demanded in kgs and y-axis पे price in rupees. तो प्राइस का तो सिंपल है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10. और क्वांटिटी आप देखिए
it is 30, 45, 60, 75, 90. So basically what I can do is 15 के गैप से यदि मैं जाऊं, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 के गैप से जाते. Okay, so it is 15, 30, 45, 60, 75, 90. थोड़ा सा गैप प्रॉपर लिखना तुम लोग. Fifteen, 30, 45, 60, 75. Okay. So when price is 10, quantity demand is 30. So 10 और 30 को यदि join करें तो मुझे when price is 10, quantity demanded is 30. ये point मिला. When price is 8, quantity demanded is 45. When price is 6, quantity demanded is 60. When price is 4, quantity demanded is 75. And when price is 2, quantity demanded is 90. यदि मैं पांचों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, so I get a DD downward sloping demand curve. So मैं आपको ऐसे बता भी सकती हूँ यदि प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड अराउंड 30 है, लाइक दिस. प्राइस 8 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 45 है. प्राइस 6 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 60 है. प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 75 एंड 2 है तो ये 90 है. So make an arrow and write down DD demand curve slopes downward from right to left, and market demand curve mein you have to write market demand curve is horizontal summation. Very important. Market demand curve is horizontal summation. Summation मतलब total of individual demand curves. It is based on market demand schedule. बनाया कैसे? With the help of market demand schedule. So it is based on market demand schedule. It represents the market demand curve. जो ग्राफ है ना, the graph represents the market demand curve. So horizontal summation is a keyword. Market demand schedule and demand curve are keywords. And then further explanation वो तो हमेशा ही होता ही है, that you have to write anyways जब short note आएगा. So you have to write down DD demand curve
slopes downward from left to right. Indicating inverse relationship between price and market demand. Indicating inverse या indirect inverse relationship between price and market demand. Between price and market demand. DEMAND, right? Between price and market demand.